My dear friends, once again, welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. I am Father Edward Oliveira, sending you the greetings of the time. Next week, we will begin Lenten season. This is the last Sunday of the ordinary season, and today we are concluding the Sermon on the Plain as Jesus explained in several Sundays. Today, my dear friends, Jesus chiefly talks about his disciples who are going to have authority on this earth. In other words, he has made them people who will go and preach his word. Well, if they have learned from the Master the proper word of God, then they are truly prepared to go. That there is a difference. What is the difference? The difference is this. Is it enough to know what the Master has said? But is it also necessary that we live like the Master? Jesus points out to those people who are also authorities on this earth. People like the Pharisees, the Sadducees, the judges, the teachers, lawyers, etc. They were the people who were custodians of the religion. But what did they do? They imposed these laws upon the people, what they should do and what they should not do. But they themselves wouldn't do it. For example, Jesus said, you believed that you should look after your father and mother. But there was another law that said that if you offer something to God, you don't need to bother about it. So what did they do? They offered their parents to God and they said, now we got nothing to do because they have been offered to God. Well, this was actually cheating. Therefore, Jesus today is telling his disciples they need to be authentic. They need to be real, genuine people. And this will not come only by learning what Jesus said, but by doing what Jesus did. For Jesus very clearly said that I did not come to serve people in the way those people were serving. I came that people may not serve me first, but I will go out of the way to serve them. Now, this needs a lot of humility. Dear friends, Jesus today gives us small parables. It tells them that you should be like a good tree that gives good fruit. A good tree will always give good fruit, he says. But he says, if you are bad, you're not going to give good fruits at all. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु मुझे और आप लोगों में से सबको वह बुलावा देता है, खास तौर पर जिनके पास अधिकार है। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पास बहुत अधिकार रहता है। उसी प्रकार हम जो पुरोहित हैं, टीचर हैं या अन्य जैसे लोग हैं जिनके पास अधिकार रहता है, यहां तक कि माता पिताओं के पास भी अधिकार है। लेकिन वह अधिकार उपयोग में लाने के पहले उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका जीवन कैसा है। अगर मेरा जीवन सही नहीं है, मेरा कोई अच्छा उदाहरण मैं दे नहीं सकता हूं, तो मैं जो कहता हूं वो सब बातें बिल्कुल निरर्थक होंगी। इसीलिए क्योंकि मेरे जीवन को देखकर ही लोग जान जाएंगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, अक्सर क्या होता है, जिनके पास अधिकार है उसका दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, और हर प्रकार से ये होता है। इसीलिए प्रभु आज हम सबों को जागरूक करते हैं कि इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। He wants us once again to introspect, to go deeper into ourselves and ask ourselves what is wrong with us. Sometimes we are like those people who are colorblind. Why? Colorblind people sometimes do not know, they are not able to see some of the colors. It's only when they do certain introspection, go for a test, they know what it is. ठीक उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हमारे संपूर्ण जीवन को हमें अंदरूनी रूप से देखना है, केवल बाहरी रूप से नहीं, कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, किस प्रकार का जीवन जी रहा हूं, किस प्रकार का व्यक्ति हूं, और मेरे वचन कैसे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, ये सब हमें देखना होगा। जब मैं इस प्रकार का व्यक्ति होऊंगा जिसको अधिकार है, मैं टीचर हूं, फादर हूं, पॉलिटिशियन हूं, कोई भी हूं, तब मेरा आचरण अच्छा होगा। जैसे महात्मा गांधी का था, जैसे मदर तेरेसा का था, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका आचरण था, उसी से लोग सीख गए। आज भी लोग उनको भूल नहीं जाते हैं।
तो आइए हम प्रभु से कुछ सीखें, क्योंकि जैसे संत पौलुस हमें बताता है कि जैसे मैंने प्रभु से सीखा है उसी को मैं आपको बताता हूं। प्रभु ने हमें सिखाया है, उसको हम अपने जीवन में, हमारे व्यवहार में, अपने वचनों में उतारने के लिए कोशिश करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।